How are you all? I hope all of you are doing very good. And as I am seeing in all live classes that all of you children are responding very well. Sorry. So I hope for the best, and I want your participation as much as possible, because when you children make queries, we feel very good, है ना? So today I have come with new subject, that is GK. This is nothing new, but once in a week we have GK, so this is new. Similar words. It is a topic for today. Similar words. Today we will start chapter 2, and the topic of the chapter is similar words. The word beta similar. The word similar means एक जैसा, जो दिखने में एक जैसा हो, जो सुनने में एक जैसा हो, दिखने में नहीं, मतलब जो एक जैसा हो, मीन्स कि जिसका मीनिंग जो है यहाँ पर वर्ड के अकॉर्डिंग एक जैसा ही हो. ओके, सो व्हाट आर दोज वर्ड्स that we will discuss in this class. So first number word is given angry. Fine. Now what is the word angry means? Angry means that जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, है ना, तो actually human being nature, human moods are varying from time to time. थोड़ी देर में हम हंस भी लेते हैं, थोड़ी देर बाद हमें कोई बात पे गुस्सा भी आ जाता है ना. So these are called different kinds of moods, depends on the different situation. Fine. So here the word angry. Angry means बहुत गुस्सा आना. So what is the another meaning in English for angry? So the word is furious. Okay, the word is furious. So both the word angry means furious and furious means angry. ठीक है? So both the words are similar to each other in relation to its meaning. Okay beta? So this is the key term which I have discussed. Now let's we discuss one more new word. Second number word is dangerous. Dangerous, कई बार हम बोलते हैं ना कि ये बहुत डेंजर है. डेंजर मीन्स फुल ऑफ, बहुत सारे जिसमें खतरे होते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड डेंजरस. सो व्हाट इज द अनदर मीनिंग ऑफ डेंजर? दैट इज द hazardous. Yes, hazardous. Hazards means danger and danger means hazardous. So that is the similar to this word is similar to dangerous and dangerous is similar to hazardous. Okay beta? Now let's move to the third number. Third is particular. What is the word? Particular. And the particular word means स्पेसिफिक. पर्टिकुलर मतलब जो कोई खास चीज हो, वही एक चीज हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना. तो पर्टिकुलर मीन्स एग्जैक्ट एंड द वर्ड एग्जैक्ट मीन्स स्पेसिफिक, मतलब बहुत खास चीज, बहुत खास पॉइंट, है ना. सो द वर्ड पर्टिकुलर मीन्स स्पेसिफिक and the specific means particular. So both the terms have the similar meaning for each other. Fine. Now fourth number is break. The word break means rupture. Fine. So the word break. Break का मतलब क्या होता है? टूटना. टूटना मतलब ये लाइन है, ये बीच में से टूट गई. So this is a break. Break means rupture. So the break means rupture. What is the another meaning of break? It is rupture, and rupture means break. Very simple. Understood the concept? Now fifth number is destroy. The word destroy means demolish. Okay beta? Destroy means किसी को पूरा मतलब destroy कर देना, खत्म कर देना, एकदम से पूरा उसका fatal हो जाना. Fine. So बर्बाद हो जाना. So the word destroy means demolish, and the word demolish means to destroy. Okay beta, have you understood? So this is all about the similar words. Similar words means having the same meaning. Okay. So the meaning of angry is furious. Dangerous means hazardous. Particular
चीज, कोई खास बात? नेक्स्ट इज ब्रेक. ब्रेक मीन्स रप्चर, destroy means demolish, मतलब कि खत्म हो जाना. Okay, fine. So this is all about the chapter 2 similar words, and you please try to understand. And now I will be starting one more. Now let's we start one more new chapter. And what is the topic of the new chapter? It is word pair. Huh? So now here I will start. I will write some lines which will be having some blanks, and these blanks we have to fill with the proper word pairs. Okay. So let's see how to do. See beta, in your book, first number is Sumiran. Sumiran lost his dash in the ground. So Sumiran, the boy name is Sumiran. Sumiran has lost dash. It is the question mark because it is the blank which we have to fill here correct word pair. Fine. So Sumiran has lost dash in the playground. अब सुमिरन जो है ग्राउंड गया था, प्लेग्राउंड गया था खेलने के लिए. तो खेलने के टाइम ग्राउंड में क्या भूल के आ गया? ऑब्वियसली वो स्कूल बैग तो नहीं भूल के आया है ना, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन विद playground. There is no relation of school bag with playground. Playground is supposed to play there. Fine. So what he could be forgetting there, what he could be losing there. So the correct answer is bat and ball. Any playing equipment we can write bat and ball, racket, and cock, anything that's related to playing equipments. Now next number is all my dash are in US. अब ये यहाँ ये बताया जा रहा है कि मेरे वो मीन्स यहाँ कोई रिलेटिव का नाम होगा. आर इन यूएस, यूएस में रहते हैं. ऑल बहुत सारे, तो घर में बहुत सारे कौन सारे रिलेटिव्स हो सकते हैं? अंकल हो सकते हैं, आंट्स हो सकते हैं, है ना, और कजिन्स हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे ऑल. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अंकल एंड aunt. Okay, all my uncles and aunts are in US. मतलब कि मेरे जितने भी चाचा और चाची हैं, आंट और अंकल्स हैं, वो सारे कहाँ हैं? यूएस में रहते हैं. That is the perfect combination of word pair. Uncles and aunt. This is a pair. Bat and ball. This is again a pair. ठीक है. Now next is my grandfather educated all his dash. My grandfather educated all his dash. अब मेरे ग्रैंडफादर ने अपने सारे इनको क्या किया? एजुकेट किया, पढ़ाया लिखाया. सो ग्रैंडफादर ने किन सारों को एजुकेट किया? ही एजुकेटेड ऑल हिज सन्स एंड daughters. It will be the correct word pair because grandfather ने क्या किया? अपने सारे बेटे और बेटियों को पढ़ाया था. Understood beta? This is all about this chapter. So randomly I have picked some sentences to make the concept clear about this chapter. Now rest is up to you that how will you write and how do you solve this remaining part. And if you have any queries, if you face any difficulties, you can ask me. Okay. So let's move to the another topic. Okay. Let's start again a new part of today's connection. Now next part is word puzzle. Word puzzle like crossword. बेटा आप लोगों ने खेला होगा ना crossword. आप लोगों ने बहुत सारे सॉल्व भी किए होंगे. मैगजीन्स में आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, स्मॉल बॉक्सेस होते हैं. क्रॉसवर्ड में क्या होता है?
कि अक्रॉस लाइन होती है और एक डाउन लाइन होती है ना, और बीच में क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं जिनमें आपको वर्ड कुछ फिल करने होते हैं। तो कुछ कॉमन वर्ड तो अक्रॉस में चले जाते हैं, उनको फॉलो करते हुए क्या होता है, डाउनवर्ड्स वर्ड्स बनते हैं। सो इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही है, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, देयर आर सम क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट आंसर, फाइंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट आंसर यू हैव टू फिल इन द blank boxes. Okay, so this part you have to be very careful because wrong spelling will not be continuing with the next part. If you are writing wrong spelling, आपका बेटा नेक्स्ट में आंसर नहीं आएगा। तो जो भी स्पेलिंग है वर्ड की बहुत अच्छे से आप केयरफुली फिल करोगे, तभी जाके दूसरी करेक्टिविटी में आपके आंसर्स मैच हो पाएंगे। अदरवाइज आपका आंसर राइट भी होगा ना, तो भी आप क्या हो, यू विल बी केप्ट थिंकिंग कि कहाँ गलती है। So question number across. I will solve now across part. Across means this horizontal line. This part we will be solving. So first number is word opposite to see cloudy, है ना। तो बेटा उस वर्ड को क्या बोलते हैं जब आसमान में बहुत सारे क्लाउड होते हैं ना, बहुत सारे बादल होते हैं, देन वेदर इज वेरी क्लाउडी मीन्स इट इज अबाउट टू रेन। तो क्लाउडी मीन्स बारिश का मौसम। सो क्लाउडी का ऑपोजिट क्या होगा, इट विल बी सनी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, इट विल बी सनी। क्लाउडी मतलब बहुत बारिश का मौसम, ठंडा मौसम, बहुत ठंडी हवाएं चलती है, बारिश भी होती है, हमें अच्छा लगता है। सो ऑपोजिट ऑफ क्लाउडी विल बी सनी, यानी कि बहुत गर्मी पड़ना, बहुत धूप पड़ना, जिसमें हम बहुत परेशान रहते हैं। सो सेकेंड नंबर, कम टू द सेकेंड नंबर पार्ट, वॉइस ऑफ rumbling in summer season. It is मतलब कि जब गर्मी में बहुत तेज बारिश होती है तो आसमान में बहुत सारी आवाज़ें होती है ना, दैट रम्बलिंग साउंड है ना, उसका मतलब ये वॉइस ऑफ रम्बलिंग साउंड इन समर सीजन, मतलब कि गर्मी में, सॉरी गर्मी में जब पत्ते सूख जाते हैं, बहुत खर की आवाज़ होती है और बहुत चिल गर्मी पड़ती है ना, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, उसका ऑपोजिट होगा ठंडा मौसम होना, बहुत तेज बारिश होना, क्लाउडी होना, है ना। सो इट विल बी thunder. Thunder means the situation when we have lots of heavy clouds in the sky and thunder also starts to make noise. Third is you can take right of this to real things. अच्छा, ये है कि इसमें इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है, दिस सेंटेंस इज टेलिंग अस अबाउट अ व्हीकल, है ना, अ व्हीकल विच हैज टू व्हील्स, टू व्हीलर व्हीकल्स इज टॉक्ड अबाउट हियर। एंड व्हाट इज द टू व्हीलर हियर, हियर इज bicycle. Here is we are talking about bicycle. Bicycle is a vehicle which has two wheels. Okay, fine. So this is all about the across puzzles. Now we will start. What will we start? Now we will start downwards. Now we will start about. Now we will start downward crossword. Means ki standing line which are having in the crossword, that we will solve. Previous to this we solved across, now we'll solve downward. So downward A number is, it's too hot, let's go to pool. अच्छा, अब आज today is very hot, है ना, and in hot days what do we wish to do, where do we wish to go, we wish to go to
go to pool, and the pool where we swim, है ना? So this is called, this activity is called swimming, or you can write swim also, huh? So it is a small pool where we go to swim. Next is P number. We sleep in it when we are out for camping. जब हम बाहर जाते हैं, when we are on any tour, when we are going for outdoor outing, है ना? So there we don't have our permanent home. We just go for a tour. So that time where do we take the night stay? We take a temporary stay. And what is the place called? That is called tent. Tent is a temporary home that can be managed anywhere. Okay. And the last one is, this month comes before August. Okay beta. So which month comes before August? है ना? So January, February, March, April, May, June, July, August. So this is August, and before August what is the month one back? It is July. Very common, everyone knows. So it is called July. So these are some downward crossword which I have solved. So you will be enjoying yourself when you solve yourself the remaining part. कुछ मैंने solve किए हैं, कुछ आप लोगों को अपना mind use करके खुद solve करना है. And if you face any problem, you can ask to me. But few examples I have solved you, so you please enjoy crossword. Okay, beta. Now I am going to start one of the most interesting part of GK. हाँ, आप सभी बच्चों को ये क्यूरियोसिटी होती है ना, like kids are always curious to know what, where, when, how. हाँ, so there I am going to start some question which will fulfill your curiosity. So let's start. So first one is the on which date Doordarshan. Doordarshan is one of the most famous national TV channel. When TV was invented, just right after that, nationalized channels were operated, and its name was Doordarshan. Fine. So when was this nationalized channel was operated? In which year? It was operated in the month of September 1959. Yes, Doordarshan was operated in the year 1959 from the month September. Now second number question is, when was the first motion picture shown in India? मतलब कि इंडिया में पहली बोलती हुई मूवी कब स्टार्ट हुई थी? उससे पहले जो मूवी चली थी, those movies were silent, means no dialogue was there, only motions were there, means only movements were there. हाँ, like no dialogues was not there. हाँ, so when was it started? 1930. Actually, one thing I want to make it clear: the motion pictures. Yes, motion pictures means ki the video pictures. Some types, some sorts of video. I want to make some correction in this part, because motion picture means ki the pictures which were moving. I am not talking about the dialogue which was. I just want to correct it. I am not talking about the dialogue. I am just talking about the motion pictures. Like before that, only still picture. जो picture still होती है उसके बारे में ही बताया जाता था, लेकिन उसके बाद में motion picture की मतलब pictures में लोग कैसे चल रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, आज जो सब कुछ videos वगैरह होते हैं, that was started in the year 1913. Okay बेटा. Now third one is, who coined the term organic chemistry? Organic chemistry ये किसने बनाई थी? इसको term किसने दिया था? ये जेवेला जैकोब. जेवेला जैकोब is one of the person who given the term this kind of chemistry, which is organic chemistry. Now fourth one is morning star. Morning star. बेटा आप जानते हो कि stars कब निकलते हैं? मॉर्निंग में या नाइट में? It is at night. But this is the star. हाँ, which we see in the morning. Actually this is not the star, it is a planet, but name is given because sometimes it shines in the morning. So that is, this planet's name is Venus. Venus is the planet which shines very much. Now fifth number,
by which name was Iraq known in the ancient times? Iraq. बेटा इराक जो अभी नाम से जाना जाता है, इराक का पहला पुराना नाम क्या था? What was the earlier name of Iraq? It was Mesopotamia. Actually, Mesopotamian civilization is one of the most famous civilization in the ancient time, but it is in Mesopotamia, and now what we call Iraq. Iraq is the new name of Mesopotamia. Now 6